प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज द मोस्ट peculiar important organelle of all eukaryotic cells। प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं है, वहाँ जेनेटिक मटेरियल तो साइटोप्लाज्मा में ही होता है, लेकिन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स दे possess a nucleus, they possess one nucleus usually, but sometimes binucleate cells or multinucleate cells are also found, as we see multinucleate cells in case of fungi। फंजाई में जो सेल्स हैं वो मल्टीन्यूक्लिएट होती हैं। न्यूक्लियस जो है, दिस इज द इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनेल बिकॉज इट कंट्रोल्स all the activities, all the metabolic processes which are going inside the cell. These processes are wholly controlled by the nucleus or the material of the nucleus. Therefore, nucleus is known as director of the cell। ये सेल का डायरेक्टर है, ये सेल का कंट्रोलर है, इसके इशारों पर ही सेल में तमाम तर एक्टिविटीज होती हैं। The nucleus was first of all discovered by Robert Brown in 1831। 1831 में सबसे पहले साइंटिस्ट जो था जिसने इसको डिस्कवर किया, इजाद किया, उसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। 1831 में उसने इसको डिस्कवर किया, न्यूक्लियस को, व्हेन ही वाज एग्जामिनिंग एन ऑर्चाइड रूट सेल। जब वो रूट सेल की, ऑर्चाइड के रूट सेल की एग्जाम कर रहा था, अपने माइक्रोस्कोप के नीचे एक्सपेरिमेंट कर रहा था, देख रहा था, तो उसने इन सेलों में न्यूक्लियस देखा। इससे पहले रॉबर्ट हुक ने इसे डिस्कवर किया था दैट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो रॉबर्ट ब्राउन ने इसका न्यूक्लियस डिस्कवर किया। When we see the shape of the nucleus, it may have different shape in different cells. Therefore, the shape of the nucleus may be oval, the shape of the nucleus may be spherical, the shape of the nucleus may be discoidal, depending upon the size of the cell, depending upon the size of the cell. Now, the nucleus may lie in the center of the cell। Usually nucleus जो है ये सेल के सेंटर में होता है, but sometimes it moves towards the pole or lie towards the pole, lower pole or upper pole, but usually it lies towards the upper pole। And in case of gametes, female gamete, the nucleus usually lies towards the upper pole। Each nucleus is externally covered by a double membrane। अगर हम देखेंगे इस एक सेल को, यहाँ पर एक सेल हम बनाएंगे, तो यहाँ पर अगर इसका न्यूक्लियस है बीच में, तो न्यूक्लियस के बाहर it is externally covered
nucleus is externally covered by a double membrane envelope. एक ऐसा envelope है which is double membrane, जिसके दो membrane हैं, दो membrane का बना हुआ है. The outer membrane as well as the inner membrane both are porous. Porous, ये porous हैं, semi-permeable हैं. That means it allows the substances to pass through it, but outer membrane is much more porous than the inner membrane, so that materials can pass from outside into the nucleus or from inside towards the cytoplasm. The outer membrane is also connected at certain places with endoplasmic reticulum. ये endoplasmic reticulum के साथ भी कहीं कहीं इसका कनेक्शन है. So this endoplasmic reticulum, it is externally, it is connected with the cell membrane. बाहर से इसका कनेक्शन सेल मेम्ब्रेन के साथ है. Therefore, the connection of the endoplasmic reticulum, on one side it is connected with the outer nuclear membrane, on the other side it is connected with the inner cell membrane, with the cell membrane is singular, cell membrane. Therefore, it forms the cytoskeleton of the cell or of the cytoplasma, which gives strength to the cell and saves the cell from being collapsed. तो ये पोरस होने की वजह से इससे मटेरियल्स बाहर का अंदर जाता है, अंदर का बाहर जाता है. Each nucleus is externally covered by two semi-permeable unit membranes. The outer membrane is more porous than the inner membrane and is continuous with the endoplasmic reticulum (ER) at various places. The outer membrane may also possess ribosomes on its surface. इस आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर यहाँ पर कहीं कहीं राइबोसोम्स भी अटैच हैं. कुछ राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर हैं, तो कुछ राइबोसोम्स जो हैं वो यहाँ पर हम देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर भी हैं, और यहाँ पर हम देखते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर भी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो आगे जब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम्स है तो इनको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट द टू मेम्ब्रेन्स और सेपरेटेड बाय फ्लूइड फिल्ड स्पेस. इस स्पेस को, जो इन दो के दरमियान ये स्पेस है, इस स्पेस को कहते हैं perinuclear space. The space between the two membranes of the nucleus is filled with a fluid, and this fluid-filled space is called perinuclear space, और इसको perinuclear space इसका नाम है. तो inside the inner membrane के अंदर की तरफ is present a ground substance. इसमें जो लिक्विड है, इसमें जो ग्राउंड सब्सटेंसेस हैं, इसमें जो इसका एक किस्म का साइटोप्लाज्म है, उसको कहते हैं कैरियोलेफ या उसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म. यहाँ पर इसमें हम देखते हैं इसमें जो सब्सटेंसेस हैं इसको हम कहते हैं, ये इसका नाम है कैरियोप्लाज्म
या nucleoplasm. This nucleoplasm, it consists of proteins, it consists of DNA, it consists of RNA, it consists of many mineral substances, it consists of globulins, fibrinogens, etc. Then and certain substances. At the center of the nucleus is an opaque body called the nucleolus. इसके बीच में एक ओपेक बॉडी है. ये ओपेक बॉडी, इस ओपेक बॉडी का नाम न्यूक्लियोलस है. ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस इसका नाम है. ये है ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये राइबोसोम्स हैं, ये न्यूक्लियोलस है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है या कैरियोलैफ है. ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन है. The nucleus performs the nucleolus performs three important functions. Nucleolus के 3 काम हैं. Number 1, synthesis of proteins. Number 2, synthesis of RNA. Number 3, transfer of genetic information from nucleus to cytoplasm through tRNA. tRNA के जरिए से, जो tRNA न्यूक्लियस से प्रोड्यूस होता है, इसके tRNA के जरिए से इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में जाती है. RNA जो न्यूक्लियस से सिंथेसाइज होता है, वो साइटोप्लाज्म में जाकर act as mRNA messenger है RNA and helps in the synthesis of proteins. और नंबर 3 फंक्शन जो इसकी है, that is transfer of genetic information from nucleus to cytoplasm. न्यूक्लियस से खबर लेता हुआ ये साइटोप्लाज्म में जाता है कि किस किस्म का प्रोटीन सिंथेसाइज करना है. अब न्यूक्लियस. The nucleus also contains fine thread-like chromatin fibers. न्यूक्लियस में कुछ फाइन थ्रेड-like बॉल जैसे लंबे लंबे थ्रेड्स हैं, फाइबर्स हैं. These fibers. The chromosomes are formed by tight coiling and condensation. Coiling and condensation. By tight coiling and condensation of these fibers in chromatin fibers during cell division. जब सेल डिवीजन तैयार होता है, उस वक्त ये क्रोमैटिन फाइबर्स जो होते हैं, इनकी कॉइलिंग, टाइट कॉइलिंग हो जाती है. कॉइलिंग के साथ साथ कंडेंसेशन, ये चिमट जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, और क्रोमोसोम्स उनसे तैयार होते. फिर इनको, इन क्रोमैटिन फाइबर्स को क्रोमोसोम्स का नाम दिया गया है. The number of these chromosomes is fixed for a species. इन क्रोमोसोमों का नंबर एक स्पीशीज के लिए फिक्स्ड है, चाहे ये 10 है, 4 है, 20 है. जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स में 46 chromosomes or 23 pairs of chromosomes, and this number is fixed for humans. The term chromosome was first of all used by Welder in 1888. 1888 में वेल्डर एक साइंटिस्ट था जिसने इनका नाम क्रोमोसोम रखा, लेकिन इससे पहले इनको इन थ्रेड लाइक क्रोमोसोम्स को डिस्कवर किया था होफमिस्टर, HOFMEISTER. होफमिस्टर जो साइंटिस्ट था, उसने क्रोमोसोम्स को पहले देखा, पहले डिस्कवर किया, बट दे वर नेम्ड बाय वेल्डर इन 1888.
The chromosomes are made up of, chromosome किससे बने हुए हैं? Chromosomes are made up of DNA. They are made up of a little RNA. A little RNA इसमें plus little RNA, histone and non-histone type of प्रोटीन, और इसमें कुछ मिनरल्स, फॉस्फेट मिनरल्स वगैरह भी हैं। इससे ये क्रोमोसोम्स तैयार हो गए हैं। द क्रोमोसोम्स पोजेस जेनेटिक इंफॉर्मेशन, इन क्रोमोसोम्स में ही जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, एंड दैट जेनेटिक इंफॉर्मेशन व ट्रांसफर्स कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। Therefore, the functions of nucleus are: number first function of nucleus is that it guides, directs the cytoplasm, directs the ribosomes to synthesize proteins. Number first function है कि that synthesis of proteins takes place by the directions of the nucleus. DNA present in the nucleus directs the protein synthesis. Number 2 is दूसरी function, DNA acts as genetic material. DNA जो है it acts as genetic material, इससे क्रोमोसोम तैयार होते हैं, क्रोमोसोम से ही जेनेटिक कैरेक्टर्स पास ऑन होते हैं from parents to offsprings. Therefore, nucleus controls cell division and is essential for the survival of the cell. So DNA जो है न्यूक्लियस जो है इट कंट्रोल, इससे सेल डिवीजन कंट्रोल में रहता है, और सेल डिवीजन की वजह से सेल्स सरवाइव करती हैं, जिंदा रहती हैं। चौथी फंक्शन है आरएनए सिंथेसाइज्ड बाय द न्यूक्लियोलस। जो आरएनए सिंथेसाइज है न्यूक्लियोलस के जरिए से सिंथेसाइज होते हैं ऑफ द न्यूक्लियस। आरएनए इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस से में मदद देता है। इस तरह से हमने डिस्कस किया न्यूक्लियस को कि यूकैरियोटिक सेल possess nucleus. Nucleus is called a director of the cell. Nucleus was discovered by Robert Brown in 1831. Nucleus may be oval, spherical, or discoidal in shape. Nucleus may lie in the center or towards one pole of the cell. Nucleus is surrounded by two unit membranes. Outer membrane is more porous than the inner membrane. Our outer membrane is connected with the endoplasmic reticulum at various places. The outer membrane also possesses ribosomes on its surface. The two nuclear membranes are filled with a fluid called the nucleoplasm or nucleolaph. Inside the inner membrane is present a ground substance called a matrix. This ground substance called a matrix or karyolaph or nucleoplasm. The nucleoplasm contains DNA, RNA, proteins, amino acids, globulins, certain minerals, etc. At the center of the nucleus is present an opaque body called the nucleolus. The nucleolus performs three important functions. Number first is synthesis of proteins. Number second, synthesis of RNA. Number third, transfer of genetic information from nucleus to cytoplasm through tRNA. The nucleus also contains fine thread-like processes called chromatin fibers. These chromatin fibers produce chromosomes after tight coiling and condensation. The number of the chromosomes is fixed for a species. The term chromosome was first of all used by Valdier in 1888, though they were discovered by Hofmeister. The chromosomes are made up of DNA, little RNA,
histone and non-histone type of proteins, and certain minerals. The chromosomes are made up of, the chromosomes possess genetic information. Functions of chromosome. Chromosome produces the following function. Number 1, DNA present in the chromosome directs the protein synthesis. Number 2, DNA acts as the genetic material and possesses passes on characters to successive generations and passes characters to successive generations. Number 3, nucleus controls cell division and is essential for the survival of the cell. Number 4, RNA synthesized by the nucleolus of the nucleus. RNA is synthesized by the nucleolus of the nucleus. RNA is important for प्रोटीन सिंथेसिस। इस तरह से हमने न्यूक्लियस को एक्सप्लेन किया, तो मुझे उम्मीद है आप इसको समझ पाओगे, आप इसको अच्छी तरह से इसका नोट बनाओगे और फिर इसको याद रखोगे उम्र भर के लिए। बाकी अस्सलाम।